नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। आई एम 𝐂𝐤𝐧𝐤𝐬, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सॉरी फॉर द स्मॉल डिले, 15 मिनट्स 15 मिनट डिले हो चुका है। आई एक्सक्यूज फॉर दैट, थोड़ा सा इश्यू था। सो नाउ विल स्टार्ट हमारा मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 6 में जा रहे हैं हमने। मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 6, ओके। सो ये पार्ट 6 है। अब तक हमने पीएमएमसी डिस्कस किया है, मूविंग आयरन डिस्कस किया है, ओके। एंड मूविंग आयरन इतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन केवल सम एक्सप्रेशन ओरिएंटेड वी हैव डिस्कस्ड, ओके। लेकिन पीएमएमसी का पूरा का प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया है, रेंज एक्सटेंशन सब कुछ हमने वगैरह पूरा डिस्कस किया है, ओके। चलो, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, just I want to give one clarity. Some of the students were asking the telegram. चलो, I want to give the telegram ID so that आपको जो क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, वो डाउट्स हमको टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ओके। क्या हलचल है आपका? कुछ हलचल नहीं रहे, थोड़ा सा स्मॉल डिले हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ओके। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, या चलो एक बार मेरा नोट कर दो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी माय टेलीग्राम ग्रुप आईडी, सो दैट इज t.me SATISHKUMAR सतीश कुमार सर PW, ओके। तो ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप आईडी है। सो आपको कोई क्वेश्चंस डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ कोई भी डाउट्स है, करियर के डाउट्स, ओके, कोई भी डाउट्स आप इधर पूछ सकते हैं, ओके। सो जल्दी से जल्दी आप ये पर्टिकुलर आईडी को आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपका सर्कल में शेयर कर दो। या चेन्नई तो थोड़ा सा बारिश हो रहा है, स्लोली द टेम्परेचर्स आर कमिंग डाउन, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। जुलाई एंडिंग से आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा, ओके। चलो, सो रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने क्या क्या डिस्कस किया प्रीवियसली। हमने पीएमएमसी रेंज एक्सटेंशन, PMMC रेंज एक्सटेंशन एज अ अमीटर डिस्कस किया। नेक्स्ट PMMC रेंज एक्सटेंशन एज अ वोल्टमीटर डिस्कस किया। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द गेट PYQs, ओके। We have already discussed the gate PYQs. चलो, अभी आज हम क्या डिस्कस करने वाले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हमने मैक्सिमम मूविंग आयरन डिस्कस करेंगे, मूविंग आयरन का टॉर्क एक्सप्रेशन, एंड डायनामोमीटर भी डिस्कस करेंगे, डायनामोमीटर भी डिस्कस करेंगे। चलो, before going for the topic, try to answer this question first. ये भी ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, हमको गेट में आ रहा है क्वेश्चंस, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट।
आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए जल्दी। So the current I of t passing through 10 ohms of resistor. So this is the PMMC he has kept here across it, as shown in figure, has a waveform as shown figure B. Then the reading of the DC voltmeter connected across. So ये PMMC है, so PMMC measures the I average. So what is the average of this peak plus this 12 plus 5 by 2, 17 by 2, so 8.5 amperes. Okay na? So what is the voltage? The voltage is nothing but, voltage across a resistor is nothing but I average into that resistance. So if you see that, so that will be 8.5 into resistance 10 ohms. So the answer will be 85 volts. So जितने लोग लाइव में हैं, ऐसा क्वेश्चंस, वेव फॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिस मत करना, फटाफट आप आंसर कर दीजिए बेटा। नाइस। हेनरी आपका आंसर कितना है? जल्दी बताओ बेटा, आपका आंसर कितना है? चलो next, let us start over the चलो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सो अब तक हमने पीएमएमसी डिस्कस किया। पीएमएमसी में the object which is moving was the pointer, as a coil, and the permanent magnet was fixed. But here the next topic is the moving iron. Okay, so if you see the moving iron, in moving iron we are having, in the place of permanent magnet we are having the electromagnet. electromagnet बोलो तो क्या है? एक coil है। ओके, कॉइल में करंट जा रहा है, सो करंट की वजह से क्या होगा? उसमें फ्लक्स जनरेट होगा। सो दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स अट्रैक्ट्स दिस पर्टिकुलर डिस्क, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इसमें कितना हो रहा है? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर दैट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ थीटा दैट इज हैपनिंग इन दिस आयरन डिस्क। सो मूविंग आयरन में फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट? सो व्हेनेवर करंट इज पास, when current passes, at that time only there is a magnetic field. That is the reason. Whenever the current passes, at that time only the magnetic field. So that is the major reason, my dear. Okay, so if there is no current, then there is no magnetic field, and the moving part is the iron disc. So इसके लिए expressions देखो बेटा, फटाफट मैं expression भी देना चाहता हूँ आपको। So moving iron के लिए if you see the change in current is going to create change in magnetic flux. Incremental in the current of the moving iron will create incremental in the flux. The incremental in the flux will create incremental in the force. Incremental in the force of attraction will create increment in the deflection. Increment in the deflection will create the increment in the self inductance. So try to understand ये particular steps, क्योंकि ये actually derivations इतना important नहीं है हमारा गेट के लिए, लेकिन आपको क्लैरिटी है। सपोज अगर सेमेस्टर एग्जाम्स प्रिपेयर हो रहे हैं और आईएएस एग्जाम में कन्वेंशनल पेपर प्रिपेयर हो रहा है, उसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सो अगर आपको ये क्लैरिटी आना चाहिए, क्लैरिटी के लिए ले सकते हैं। नो सर हमको गेट के लिए बोलो तो उसको स्किप कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ उसके बारे में, इसलिए देखो, दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट, द चेंज इन करंट क्रिएट्स increment in the current will create increment in the flux. Increment in the flux will create increment in the attracting force. Increment in the attractive force will create increment in the deflection. Increment in the deflection will create increment in the self inductance. Okay, so now because of this what happens? The self inductance is also going to be changed.
सो अगर ध्यान से देखो तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दीज आर द एक्सप्रेशन, द डिफ्लेक्शन टॉर्क, डायरेक्टली आई एम गिविंग द एक्सप्रेशन, आई एम नॉट डिस्कसिंग द डेरिवेशन पार्ट हियर, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, 1/2 I² dl/d होगा। ओके, सो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क देखो तो ये होगा, देखो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस यू हैव टू रिमेंबर, वन इज द डिफ्लेक्शन टॉर्क, अदर वन इज द कंट्रोलिंग टॉर्क। So please make a note of these points. Deflection torque is 1/2 I² dl/d, controlling torque is equal to Kc/d। okay, at steady state क्या होगा, अगर आपको डेरिवेशन चाहे बोले तो आप ये नोट्स कलेक्ट करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं गेट के लिए डेरिवेशंस के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके वाह, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट यू कैन फोकस ऑन द Henry, you are there? चलो, एट स्टडी स्टेट क्या होगा, एट स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक्सप्रेशन है 1/2 I² dl/d, कंट्रोलिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है Kc/d। सो अगर इफ यू सी दिस, इट इज I² इज कमिंग, दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन जो कुछ है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू, पॉसिबल है, पॉसिबल है, अगर आपने ध्यान से प्रिपेयर किया तो कुछ भी पॉसिबल है सूरज तलकुदार, और कुछ भी पॉसिबल है रे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So deflection torque is equal to controlling torque. If you do the derivation part, yeah, people are joining the Telegram group. Nice. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। सो ऑल द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम है, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क मस्ट बी बैलेंस विद द कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर एग्जांपल हमने पीएमएमसी लिया, पीएमएमसी में डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू पीएमएमसी 0, एक्सप्रेशन क्या है पीएमएमसी का, बिना BINA। कंट्रोलिंग टॉर्क एक्सप्रेशन क्या है, Kc/d। हियर द सेम टू सेम हमने क्या कर रहे हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 I² dl/d, कंट्रोलिंग टॉर्क TC इज इक्वल टू Kc/d। ओके, एट स्टडी स्टेट क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। ओके, 1/2 I² dl/d इज इक्वल टू Kc/d। सो थीटा इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू I²। सो वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। हमारा पीएमएमसी में क्या हो गया, सो फॉर पीएमएमसी इट इज डिफरेंट, for PMMC theta was proportional to I, so that is the difference you have to understand। so this is average value, this is the RMS value। so अगर आपने theta is proportional to I comes because of V, so हमने PM मूविंग आयरन को अमीटर की तरफ से यूज कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मूविंग आयरन को वोल्टमीटर की तरफ से यूज कर रहे हैं, हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। सो दोनों केसेस में हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपको हमेशा RMS वैल्यू मेजर करेगा। सो अगर ध्यान से देखो तो उसका ग्राफ, द ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, क्योंकि सपोज इफ यू सी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I², फॉर स्मॉलर करंट्स 0.2 एम्पियर्स द डिफ्लेक्शन इज 0.04, 0.25 amperes the deflection was 0.0625, so it is very near। so these readings are near crowded readings, these readings are very much near, that means for smaller nearest readings the deflection is crowded, so here the deflection is crowded। next इसके बाद suppose slowly the current is a bit space increasing 1 ampere to 2 amperes, then almost we are going to get linear। okay, so 1 ampere 1.5, see these are linear, but when the current is changing abruptly 2 amperes 5 amperes, the deflection के बीच में इतना space आ रहा है देखो 425, so that is it is spacious, so this is the spacious, so this is linear and this is spacious। got it my dear? so एक crowded है, एक linear है, एक spacious है, you understand? crowded है, linear है, spacious है। so the moving iron scale is not uniform। PMMC का स्केल यूनिफॉर्म है, मूविंग आयरन का स्केल नॉन यूनिफॉर्म है, ये ध्यान में रख दो।
Yes, Surajit, you can achieve, that is not a big issue. Anybody any doubt here, you can ask me. In this particular slide, if you have any doubt, you can ask me. Yeah, मैंने टेलीग्राम ग्रुप भेज दिया है. So this is my first slide. In the first slide itself I have mentioned my telegram ID. So you can use this particular ID for asking the questions. t.me Satish Kumar sir PW. ये particular PW का official company ID है. तो यहाँ आपने measurements का questions doubts पूछ सकते हैं. कोई अगर कोई preparation का कोई doubts है तो वो भी पूछ सकते हैं. Okay. And हम हमारा classes का details and doubts का clarification हुआ भी कर सकते हैं. Now let us come back to this important session. So this is our direct. So moving errand का बढ़िया diagram है. चलो. Now let us go for the question. फटाफट. Try to answer this question. IIT Madras 2003 का सवाल है, जल्दी बताइए बेटा. IIT Madras 2003 का सवाल है. Try to answer this question. The self-inductance of a certain moving iron instrument, the inductance of a certain moving iron ammeter expressed as 10 plus 30 theta minus theta square by 4 microhenry, where theta is a deflection in radians from the zero position. The control spring torque is 25 into 10 power minus 6 Newton meter per radian. The deflection of the pointer in radian when the meter carries a current of 5 amperes is dash. Okay, आंसर करने की कोशिश करो बेटा. कैसे करना है क्वेश्चन को. सो आपको पता है डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क. द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज नथिंग बट 1/2 I square dl by d theta. तो यहाँ आपको पहले dl by d theta चाहिए. सो व्हाट इज द dl by d theta? So we see constant 0. This is 30 theta. So that is 30 minus theta square by 4, that will be theta by 2. Okay, chalo. So now TD is equal to TC. TC he has given. So TC he has given how much? The TC value, how much he has given beta? Controlling torque value. The spring torque was 25 into 10 power minus 6 Newton meter per radian. Yeah. Okay, TD is equal to TC has given 1/2 I square dl. So now what we can do, current is given 5 amperes. So 1/2 I square. So what is the I? I is given as 5 amperes. So 5 square dl by d theta, that is 30 minus theta by 2 is equal to controlling torque. Control torque कितना है? 25 into 10 power minus 6. So आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ. this 25 gets cancelled. Okay, so 15 minus theta 4. तो कितना आएगा? is asking the deflection of the point in radians. My dear students, dl by theta is also in micro आएगा. So why? Because it is micro ना, so don't forget that. So this also will be in micro, 10 to the power of minus 6. So this also in 10 to the power of minus 6 आएगा. टेन पावर माइनस 6. तो ये भी खत्म हो जाएगा. अभी कितना है आंसर? 30/2, 15 minus theta by 4. 15 is equal to theta by 4. 4 is theta is equal to
क्या कोई मिस्टेक है क्या? फिफ्टीन माइनस थीटा बाई 4 कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक दिस इज कोई मिस्टेक है इसमें। आई थिंक इट्स विल बी 3। समवेयर वी हैव डन अ मिस्टेक। चेक करो एक बार क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 10 plus 30 theta। Something mistake here. Thirty minus theta by 2 is equal to 2. 3 minus theta equal to आ रहा है 15 minus 1 equal to theta by 4 14 theta by 4 16 डिग्री आ रहा है ना। क्या मिस्टेक है इसमें? ये भी रेडियंस में है, ये भी रेडियंस में है। एक बार चेक करो बेटा, इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे बताइए। सॉरी केसी थीटा भूल गए हमने। हियर shit, this is not TC, right? This is KC. Wow. Here it is spring constant. Wow, we have done a mistake. It is not the torque, it is a spring constant KC. That is a mistake. Okay, so let me make corrections here once again. होता है आजकल, मिस्टेक्स भी हो सकता है। मिस्टेक्स है तो भी अच्छा होगा बस स्टूडेंट्स के सामने। कितना स्टूडेंट्स अलर्ट है हम देख सकते हैं। सो ये है हमारा L 10 plus 30 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 4। ओके, ये है हमारा L। तो मुझे DL बाई डी थीटा चाहिए, मुझे DL बाई डी थीटा चाहिए। तो दिस इज 30 माइनस
थीटा स्क्वायर मीन्स 2 थीटा बाई 4, सो थीटा बाई 2 होगा. बट रिमेंबर दिस इज 10⁻⁶, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, नेक्स्ट ये हमको क्या दिया ना, यही कंफ्यूजन रहता है. एक्चुअली टार्क का यूनिट्स न्यूटन मीटर तक ही होना है. न्यूटन मीटर पर रेडियन दिया बोलो तो क्या है, वो टार्क नहीं है, वो केसी है, स्प्रिंग कांस्टेंट. सो केसी कितना दिया है, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन. सो डिफ्लेक्शन टार्क हो गया, कंट्रोलिंग टार्क इज इक्वल टू केसी थीटा. तो अभी क्या होगा हमारे साथ, डेरिवेशन कैसा करना, डिफ्लेक्शन टार्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टार्क ना. डिफ्लेक्शन टार्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टार्क. डिफ्लेक्शन टार्क क्या है, 1/2 I² dl/d थीटा. कंट्रोलिंग टार्क क्या है, kc थीटा. अभी सब्जेक्शन करंट कितना है, 5 एम्पियर्स. सो दिस इज 5². dl/d कितना है, 30 माइनस थीटा बाई 2 इंटू 10⁻⁶. kc कितना दिया है, दिस इज 25 इंटू 10⁻⁶. दिस इज थीटा. ओके, सो अभी कैंसिल करो, जो कैंसिल कर सकते हैं. 5² कट, 10⁻⁶ कट. सो 15 माइनस थीटा बाई 15 माइनस थीटा बाई 4 इज इक्वल टू थीटा. 15 माइनस थीटा बाई 4 is equal to theta. So 15 is equal to theta plus theta by 4, 5 theta by 4. So theta कितना होगा, 15 4 जा 60 by 12, so 12 degrees. 12 रेडियंस होगा, वही 12 होना है. इस मिस्टेक. ओके, all of you are understanding? Yeah, क्वेश्चन में मिस्टेक है. Let us go for the next important concept है range extension. All of you try to note on this. Next concept is range extension. Just like PMMC range extension, also we have आवाज क्लियर आ रहा है. So just like PMMC range extension, PMMC can be suitable as ammeter, range can be extended. PMMC also can be stored as voltmeter, its range can be extended. लेकिन उधर केवल it is resistive type था, आवाज क्लियर है. चलो, सो इधर केवल रेसिस्टर था. वाई, बिकॉज देयर इज नो इंडक्टेंस इफेक्ट. बट हियर मूविंग आयरन इज हैविंग इंडक्टेंस इफेक्ट. दैट्स व्हाई मूविंग आयरन रेंज एक्सटेंड्स. हाउ टू रिप्रेजेंट? सो दिस इज अवर IM, दिस इज अवर LM, दिस इज अवर RM. तो ये होगा हमारा डायग्राम. Okay, this is our diagram. Is it possible? So this is the diagram. That is a fundamental difference. Okay. So now suppose इसको range extension like ammeter करना चाहते हो. If you want to extend its range as a ammeter, if you want to extend its range as a ammeter, ammeter की तरफ से आपने range extend करना चाहते हो, उसके across में क्या करना चाहिए? उसके across में हमने shunt resistance को डालना है. तो शंट कंपोनेंट्स क्या होना है? शंट कंपोनेंट शंट रेजिस्टेंस होना है.
शंट कॉइल इंडक्टेंस भी होना है. See, moving iron is different from the PMMC. In PMMC we don't have the inductance, but here in moving iron the changeable parameter is inductance also. That's why in the meter representation हमने मीटर का इंडक्टेंस भी दिखा सकते हैं. तो जो हमने शंट कंपोनेंट कनेक्ट कर रहे वो शंट कंपोनेंट को भी हमारे पास क्या होगा, शंट कंपोनेंट इज आल्सो विल हैव सम इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस. So this is our shunt component LSH and ये है हमारा RSH. So this is LSH, this is RSH. Okay my dear. अभी क्या होगा, so this is our total I which for which the current can be extended. So this is the I and this is our ISH. Okay, so this is our IM. So VM is equal to VSH. So the voltage across this and the voltage across this both are parallel. So VM is equal to VSH. So what I can write, VM is equal to IM into ZM, ISH into ZSH. Okay, so IM by ISH I can write it as ZSH by ZM. So ZSH I can write as R. ZSH क्या बोलते हैं, ये R plus omega LSH. So RHH square plus omega LSH whole square, and ZM is RM square plus omega LM whole square. Okay, so now if I am taking this RSH and RM outside, क्या होगा देखो, IM by ISH is equal to root over RHH square plus omega LH whole square. If I take an RSH outside, omega LSH by RSH. If I take omega LM by RM, आपको पता है L by R is equal to time constant. So time constant is equal to L by R. So this is the time constant of shunt coil, this is the time constant of the meter coil. So अभी क्या होगा, 1 plus omega tau SH whole square, 1 plus omega tau M whole square होगा. Okay, so IM by SH is equal to RSH by RM हो गया. When if you have chosen the shunt and the meter coil such a way, दोनों का time constant same हो रहा है. You have chosen shunt component and meter component such a way, so उसको दोनों का time constant same हो रहा है. So then क्या होगा, automatically ये दोनों कट हो जाएगा when ये condition static होने के बाद. So IM by SH is equal to root over, ये खत्म हो जाएगा RS by RM. So हमको basic expression again हमारा PMMs की तरफ से आ गया, PMMs की तरफ से IM RM is equal to ISH RSH आ गया. So यहाँ से आप simplify करें तो so क्या होगा, IM by SH is equal to RSH by RM. Simplify करते जाओ, so definitely आपको same to same आएगा, same like हमारा PMMC में जो आ गया ना, तो वही आएगा. So for range extension ammeter there is not much big deal. Yeah, see this IM by SH is equal to RSH by RM. हमको शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट चाहिए. So RSH is equal to RM into IM by SH. I is equal to, that is the total current that is split into two parts, IM plus ISH. Okay, so RSH is equal to RM into IM by SH. ISH I can write as I minus IM. So if I take IM out, I by IM minus IM, so this IM gets cancelled. So RM by M minus 1. So where M is called multiplying factor. M is called what? Multiplying factor. So please have a collection of all these data. Multiplying factor M is equal to क्या है, I by IM. ये है multiplying factor. Okay. So tau SH is equal to tau M, LSH by RSH is equal to LM by RM हो गया एक्सप्रेशन. अगर आपने शंट का कंपोनेंट्स, चाहे आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, शंट कंपोनेंट्स पूछ सकता है. जो रेंज एक्सटेंशन के लिए हमारे पास शंट रेजिस्टेंस कितना होना है, शंट इंडक्टेंस कितना होना है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा क्वेश्चंस को जाने के लिए पहले फटाफट.
Similarly, I can go for moving air instrumentation range. अभी क्लियर है? एक जर्क आ गया. चलो, या range extension as a voltmeter. What can be the difference? See, if you see the diagram, ये है हमारा IM, this is our LM, this is our RM, this is our RM. Okay, so ये है हमारा मीटर डायग्राम. So this is हमारा मीटर डायग्राम. Okay, this is our meter diagram. So now for range extension of voltmeter, हम क्या करना है, उसका वोल्टेज एक्सटेंशन करने के लिए एक रेजिस्टर को अटैच करना है सीरीज में. So the voltage across this is already Vm. The voltage across this is what? And now here I am attaching one series resistor. So this is our series resistor. तो ये होगा हमारा पुराना वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V होगा. So this is our voltage V. So Vm has to be extended towards V. So if you take the total V by Vm ratio, V means what? The total voltage across this series component of series resistor and as well as meter resistor. So V by Vm. So what is V? V is nothing but this is the total I. So this is the total I. So I can write as Rm plus Rsc plus j omega Lm. अभी का Z लेना है ना. So इधर ये दोनों सीरीज में होगा. So Rm plus Rsc plus j omega Lm. Whereas Vm is equal to what? This particular part, Im Rm plus j omega Lm. ये current and ये current दोनों same है. So I gets cancelled here. Okay. So this particular current and this particular current gets this current and this current gets cancelled. So अभी क्या हो गया? V by Vm is equal to Rm plus, if you take the magnitude, square root of Rm plus Rsc whole square plus omega Lm whole square, ये नीचे भी Rm whole square plus omega Lm whole square. So this is what we call multiplying factor. हमको क्या चाहिए? multiplying factor चाहिए. तो यहाँ से आप expression को use करके जा सकते हैं. So this is the expression. V by Vm is equal to square root of Rm plus Rsc whole square plus omega Lm whole square, Rm square plus omega Lm square. This is for AC. लेकिन for DC क्या होगा? For DC this component will be 0. So Rm plus Rsc, again the same expression आएगा. So for DC again the same expression. For DC expression will be same. This is for AC. Okay, so these are the list of the. So the problem is in series there is a problem actually. We are going to get a frequency error. Suppose if you see here, the V by Vm is having a dependence on the omega. That means for a particular components of Lm and Rm and LSH and RSH, for a particular frequency, the range extension value is something. And suppose if the frequency is changed, again there is a possibility of changing the voltage. Why? Because this V is dependent on the omega frequency. That's the problem. So in PMMC we don't have frequency error, like in moving error we will be having a frequency error. In moving error we are having the frequency error. Remember this, my dear. कितने लोग लाइव में हैं? मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा. आप लाइव में कितने लोग देख रहे हैं सेशन को? कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा एक बार. समझ गया आपको? फ्रीक्वेंसी एरर बोलो तो क्या है, आपको समझ में आ गया? इन पीएमएमसी हमको फ्रीक्वेंसी एरर नहीं है, क्योंकि पीएमएमसी में इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मूविंग एरर में हमको इंडक्टेंस है, इसकी वजह से क्या हो गया, उसका रेंज एक्सटेंशन करने की वजह से हमको मीटर में ओमेगा टर्म आ गया. ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ. इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट.
frequency dependent. चलो, let us go for some questions, beautiful questions. So मैंने क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज एक कैपेसिटर को अटैच कर रहे. सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी हैविंग डिफरेंट रीडिंग्स. सो फ्रीक्वेंसी एरर है, फ्रीक्वेंसी एरर के लिए क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी एरर क्यों आ रहा है, फ्रीक्वेंसी एरर इसकी वजह से आ रहा है. सो दिस इज अवर आर एम एंड दिस इज अवर एल एम, दिस इज अवर आर एम एंड दिस इज अवर एल एम ना. सो ये है हमारा बॉक्स मीटर. So now what I am doing, I am attaching a series resistor na. So now what I am telling that there is an error because of this inductance effect, because of the inductance reactance we are having a error. So ये error को eliminate करने के लिए opposite लेना है इसका counter, that is capacitor. Always remember this concept, जहाँ आपको inductance की वजह से errors आ रहे हैं उसको compensate करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं ना, उसको compensate करने के लिए हमने capacitance को use कर सकते हैं. So this is our capacitance. So उसका वैल्यू डेरिवेशन कर से आएगा. So C का वैल्यू है 0.41 L by RS square. So what is the purpose of this C? This C will eliminate the error due to the inductance reactance. So inductance reactance will be compensated by the capacitive reactance. Is it clear, my dear? चलो now let us go for the questions. Try to answer this question. Try to answer this question. ये क्वेश्चन कौन से करो बेटा? आंसर बताइए बेटा. यस, गुड इवनिंग. A moving iron ammeter, full scale torque of 240 micronewton meter with a deflection of 0 to 120 degrees at a current of 10 amperes. The rate of change of self inductance of the instrument at full scale is dash.
So he has given moving an ammeter produce a full scale torque of 240 micronewton with a deflection of 0 to 120 degrees. Current is given as 10 amperes. कितना दिया है current? 10 amperes दिया है. The rate of change of self inductance is asking. So dl by d theta is asking. That means this particular torque is deflection torque. We can take deflection torque is equal to 1 by 2 I square dl by d theta. Okay na? 1 by 2 I square dl by d theta. नीट पेपर लीक नहीं हुआ एनटीए के अकॉर्डिंग तो पता ना के जेल में मुझे पता नहीं. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द नीट पेपर. आशीष कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे. ओके सो ही हैज गिवन द डिफ्लेक्शन टॉर्क एज हाउ मच. द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज गिवन एज 240 माइक्रो न्यूटन मीटर. दिस आई कैन टेक इट एज 240 into 10 power minus 6. This is 1 by 2 I square is nothing but 10 and dl by d theta यूज कर सकते. तो कितना आएगा? I square 10 amperes 10 square. So 480 10 power minus 4. This is also in microhenry, so this is also 10 power minus 6. That is most important you have to understand in all the problems. So 10 power minus 6 aayega. Okay, 480 by 100 4.8. So the answer is 4.8 microhenry. The right answer goes to this. dl by theta is asking, so microhenry per sorry, that is the answer. Is it clear? Option C नहीं है, option B है. सॉल्व करके बोलना भैया बेटा, रैंडमली बोलना नहीं. क्या ये कौन बढ़ेगा करोड़पति का सोच देख रहे क्या? सॉल्व करके बताओ. ओके दिमाग यूज करो बेटा थोड़ा. Try to answer this question. कहाँ से हो आप सुमलता जी? आप मेरे क्लास में रेगुलर में आते हैं? Okay. A PMMC voltmeter is connected across a series combination of DC voltage source V1 2 volts and AC voltage source 3 sin 4t. The meter reads dash. So two voltages here. आपके पास दो voltages है. So this is our DC voltage. A PMMC voltmeter is connected across a series combination of a DC voltage. So let us take these are DC voltage. These are 2 volts. Okay, these are 2 volts, and this is our AC voltage. So this is 3 sin 4t. Now it's across. We have connected 2 meters. Across we have connected this is the PMMC, and this is the moving iron. I think. Oh, only PMMC. Okay. Only PMMC connect किया. So आपको पता है PMMC measures only DC. So the answer will be what? Option A will be the answer. 2 volts is the. हैदराबाद बोलो तो हैदराबाद का बिरयानी बहुत अच्छा रहता है ना. हैदराबाद is famous for biryani. I think मुगल बिरयानी. Let us go for the next question. Yeah, try to answer this question. ये तो MCQ नहीं है. लोग अगर MCQ है तो कुछ रैंडमली आपने क्या कर रहे हैं, आप ऑप्शंस डाल रहे, तो इसमें यूज करना है, थोड़ा दिमाग यूज करके बोलना है. इधर MCQ कुछ नहीं है.
The sawtooth voltage waveform shown in the figure is said to be moving iron voltmeter's reading would be closest to what? So आपको पता है moving iron always measures the VRMS. So VRMS of a triangular will क्या होगा? VM by root 3 होगा. So the right answer is 100 by root 3 volts. So the right answer is 100 by, there is a peak voltage. So peak voltage by root 3, 100 by root 3 volts. Chalo, let us go for the next question. Yeah, try to answer this question. अब बिरयानी खाते हो क्या? पढ़ाते नहीं, कुछ भी पढ़ते नहीं आज शायद. अब हमेशा बिरयानी बिरयानी खाते रहते ना हैदराबाद में. हैदराबाद के लोग ऐसे ही रहते हैं. चलो, okay, try to answer this question. What about Henry and Surajit Talukdar? Try to answer this question फटाफट. A DC voltage with ripple is given by V of t 100 plus 10 sin omega t plus 5 sin 3 omega t. Measurement of this voltage V of t made by moving coil and moving iron voltmeters show reading of V1 and V2 respectively. The value of V2 minus V1 in volts is dash. So first of all, what is the voltage he has given? V of t. V of t is given here. V of t is given as what? 100 plus 10 sin omega t plus 5 sin 3 omega t. Okay, so first coil and moving iron showing readings V1 and V2 respectively. So V1 is moving coil, V1 is with PMMC. PMMC measures average. So what is the V average? That is nothing but 100 volts. That's it. Next, V2 is moving iron. V2 is moving iron. So this measures VRMS. VRMS means क्या होगा? This is 100 by root 2. Sorry, 100 whole square plus 10 by 2 square 5 by root 2 whole square. Mass. So this is 100 square plus 100 by 2 plus 25 by 2. कितना आएगा एक बार चेक करके बताए. कैलसी यूज करना पड़ेगा. $100.312 आ रहे हैं. इसका आंसर 100.312 आ रहा है. सो डिफरेंस पूछ रहे. सो V2 माइनस V1 पूछ रहे. V2 माइनस V1 क्या होगा? सो 100.312 minus 100, so that will become as 0.312. 0.312. चलो, yeah, try to answer this question. Very interesting.
आंसर बताइए बेटा। A 0 to 1 ampere moving iron ammeter has an internal resistance of 50 milliohms and inductance of 0.1 millihenry. A shunt coil is connected to extend its range to 0 to 10 amperes for all operating frequencies. The time constant in milliseconds. Anybody? Anybody can answer this? I'm giving 2 minutes of time for you. Take 2 minutes of time. क्या हो गया? Nobody is answering. चल, see here. First try to draw the diagram. So this is our IM. This is our LM. This is our RM. This is the point you have to understand. For moving iron, in addition to meter current and meter resistance, we are also having inductance. Okay. So this is our meter. Now इसके parallel में we are having the shunt component LSH and RSH. So this is LSH and RSH. A 0 to 1 ampere moving iron ammeter. So 0 to 1 ampere means the IM is given. So IM is given as 1 ampere. Has an internal resistance of 50 milliohms. So RM is given 50 milliohms. And inductance of 0.1 milliohm. So LM is given, that is 0.1 milli, is connected to extend its range to 0 to 10 amperes. So the I is equal to 10 amperes. A shunt coil is connected to extend its range to 0 to 10 amperes. So RSH and LSH we don't know. RSH कितना है we don't know. LSH कितना है वही also don't know. The time constant in milliseconds and resistance in milliohms of the shunt coil respectively are dash. So how to solve this problem? First of all, by using this we can find out the time constant of the meter. Am I right or not? So tau m is equal to Lm by Rm. Okay. So Lm by Rm. Lm is given as 0.1. This is 50. So 0.1 divided by 50. So 1 by 500. So this is 0.2. 2 into 10 power minus 0.2 by 100.
2 into 10 power minus 3. So 2 milliseconds. 2 milliseconds. 2 milliseconds is there. But the other question is the time constant is asking and the resistance in milliohms of the shunt coil. So shunt coil का resistance बोलते RSH. So RSH कैसा find out करना? That is RM by M minus 1. So RM by M minus 1 बोले तो क्या करना? I by IM minus 1. भूलना मत. That's it. So RM कितना दिया है? RM that is 50. So 50 into 10 power minus 3 divided by I by IM कितना दिया है? I is equal to 10, IM is equal to 1. This is 10 by 1. 10 minus 1. So 50 by 9. Exactly बोलो तो 50 by 9. कितना आ रहा है एक बार चेक करके बताइए बेटा. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा. 5.55. So कितना आ रहा है? 5.55 milliohms. So 5.55 milliohms and this is the right answer. Option A is the okay. Any other doubts? If anybody is having any doubts, you can ask me. Okay, enough for today. So if the students, if you are willing to ask any doubts, students for Telegram doubts, you can use this particular ID t.me Satish Kumar Sir PW. So वहाँ आपने आपका questions पूछ सकते हैं. Okay, doubts related to career, doubts related to measurement subject, कोई भी डाउट से आप उधर पूछ सकते हैं. If anybody is having any doubts, you can ask me over there. Good night.